gentlemen, to this very special campaign across Network 18. Today on World Toilet Day, Mission Swachhta Paani is powering an elevated dialogue on sanitation empowerment. So over the next 8 hours, we are going to hear from citizens, from governments, from non-profits, sanitation warriors, change makers and policy experts. They will give us a 360-degree view. We're going to be asking each one of them and you what you make of the 5 ways in which each one of us can create an empowered sanitation and water status for India. We'd like to welcome back on stage Ravi Bhatnagar from Reckitt. We're joined by Naina Lal Kidwai, Jyoti Lamba, Parineeti Chopra is of course here with us, and we have a very, very special guest who joins us on the Mission Paani and Swachhta Mission Paani stage today, the G20 Sherpa, Mr. Amitabh Kant, who's just returned from Bali and straight here to Mumbai to join us for this very special occasion. Mr. Kant, may I have you up on stage? Ladies and gentlemen, a big round of applause. The former Niti Aayog CEO and now the G20 Sherpa, Amitabh ji, namaste. Thank you. Thank you for making the effort and joining us. I know that this has been a tough one for you to pull off, Mr. Kant, but I know that you are the only one who could have managed this, flown straight back from Bali and to Mumbai to join us here for this very special campaign. There was no other option when you tell me to come here. I felt the same, so I felt the same. No, but thank you so much, Mr. Kant. We really appreciate it. Before we talk about Mission Swachhta Paani, let's talk a little bit about G20. Yeah. It's a big moment for India. India takes on the G20 presidency. You've just returned from Bali. Explain to our viewers why this means so much. Shireen, G20 accounts for about 85% of the global GDP. It accounts for about 78% of the global trade. 90% of the global innovation and patents come from G20 countries, and it accounts for almost about 75% of the global population. It's a very, very important body as far as policy making is concerned, because it comprises of all the G7 developed world. It also comprises of all the major emerging markets. So if you want to make your voice felt, this is really the forum. For many years, India has been responding to the agenda set by the developed world. This is the first time that India will be shaping the global agenda, because it will be the president of the G20. Wow. And that gives India a huge responsibility as far as a vast range of areas is concerned. Sustainable development goals, climate action, digital transformation. I mean, really making a difference to the lives of citizens across the world. You know, you're very right in pointing out that this could be an opportunity for India to shape the agenda and bring new ideas to the table. The Prime Minister also said that India wants to put ideas that will be inclusive and take on leadership that is decisive as we take on the G20 presidency. In the context of the conversation that we're having today, Swachhta and water, what will be our approach on both of these issues? Because these are global challenges, Mr. Kant. So, Shireen, to my mind, the most critical thing that this government has pushed in the last 7 to 8 years, it's done a vast number of things, but I think the most important and the most critical initiative that was taken was the Swachhta mission. It was important because, sanitation really impacts a vast range of areas. It impacts health. It impacts nutrition, it impacts education, it impacts the livelihoods of people, it impacts women in many, many ways. And therefore, providing close to about 10.1 crore toilets across India is like providing, every citizen, I mean, the size and scale of that is like providing every citizen of Germany a toilet. That's the size and scale we must understand. Or providing close to about 8.9 million water connections, which is really about 25 million households, is people of India, is like providing, water connection to everyone living in the country of Brazil. That's the size and scale of what we are trying to do. So it's important to understand that this will have a huge impact on their health. It will have a huge
impact on nutrition, because in India we have a virtual cycle of malnutrition. That will get hugely uplifted. Wasting, stunting, and all this will have a huge impact. If you go to villages of India, if you go to different cities, I've covered Firozabad, I've covered Varanasi, I've covered Balia, Deoria, all these districts of India, where it's made a huge difference to the lives of young children, of women, that their livelihoods have got totally uplifted because of this. Then I went to Nagpur, in a slum area of Nagpur, where, you suddenly started getting, in the slums, you started getting 24/7 water connection. And, and that's on in Nagpur slum area, it was on a payment basis. It was a PPP scheme, private-public partnership scheme. And the women there in the slum area said that we would any day prefer to pay for water because it's making such a huge difference on the health condition of the entire community there. So it makes a massive difference to livelihoods, and the health burden, the cost of health, which we don't realize, falls very sharply. अमिताभ जी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा. G20 पे एक बात है कि thought leadership. So SDG 6 और sustainability पे आपको लगता है भारत is taking the lead? We are showing the path to the world? देखिए, हमने जो काम किया है अभी तक इस स्वच्छता में और अब पानी में जो हम काम कर रहे हैं, ये इस स्केल और साइज पे किसी ने काम नहीं किया. एक तो ये कि हमने टॉयलेट्स बनाए, वो तो आवश्यक था, पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना सबसे आवश्यक है. क्योंकि आप बाथरूम्स हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दीजिएगा तो उसको आगे चल के उपयोग करना जरूरी है हर समय. तो बिहेवियरल चेंज लाना बहुत आवश्यक है. और इसमें जो एक्सटेंशन, मास कम्युनिकेशन का जो काम हुआ है, और जो लोगों को समझाया गया है, और तीसरी चीज जो हुई है कि जो नई टेक्नोलॉजी बाथरूम्स बनाने की, टॉयलेट्स बनाने की जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कम पानी उपयोग होता है, ये सब बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं. और बिहेवियर का जो बदलाव आया है भारत में, उससे मुझे तो बहुत गर्व होता है कि भारत में सडनली ये एक ख्याल आया है कि सैनिटेशन को हम सेंटर स्टेज लाए, और दूसरी चीज कि हम पानी को अब इतने एक जन आंदोलन की तरह पूरे देश में फैला रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट्स के लिए पानी बहुत आवश्यक है. तो अगर हम पानी जब पहुंचाएंगे तो तीसरी चीज जो होगी कि लोगों की हैबिट्स बदलेगी, कि लोग कि अपना हाथ धोएंगे और हाथ धोकर फिर उसके बाद सफाई फैलेगी. क्योंकि सारा जो इन्फेक्शन फैलता है वो इसलिए फैलता है क्योंकि हम लोग अपना हाथ लगातार नहीं धोते हैं, और वो धोना बहुत आवश्यक है. हाथ साफ रखने की बात शुरू होगी, बिहेवियरल चेंज, तो आप फिर टॉयलेट भी साफ रखना शुरू करेंगे. मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ जो आई थिंक हम लोग बात करना भूल रहे हैं, वो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी सेक्शन जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स. आप ये समझे कि हमारे जब बाथरूम्स, स्पेशली पब्लिक बाथरूम साफ नहीं होते, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मुश्किल है. मैं सोच रही हूँ उन औरतों की जो साड़ियाँ पहनती हैं, मैं उन बुजुर्ग आदमियों की जो चलने में जिनको मुश्किल है, अगर वो पब्लिक बाथरूम साफ नहीं है, सूखा नहीं है, तो आप सोचिए कि उनकी जिंदगी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है. हम लोग जो यंग लोग हैं, हम कुछ जुगाड़ करके हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट इमेजिन द सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री who need a safe space. No, absolutely. I think the conversation that we're having comes from a very privileged place as well, because we've never had to think about not having access to a clean toilet or never having access to water. So I think it is very important for us to understand the complexities of the issue, the constraints that it causes in the lives, daily lives of regular people. Women walking kilometers, just to be able to get water, staying up all night just to be standing in lines to get a bucket full of water. I mean, this is the harsh reality, and it continues to be the harsh reality. I have seen senior citizens, I beg your pardon, I have seen senior citizens in a simple place like a mall, scared to go to the bathroom and would prefer to reach home and not use that bathroom just because it's not safe for them. Because they don't know if they're going to slip, they don't know if they're going to catch a disease. And most of the youth needs to understand this. They need to understand that change will happen from us for them. Yes, Mr. Kant, you wanted to say something. So, Shireen, for many years I worked in the traditional fisheries sector of Kerala.
And, my job was to transform their lives. And one of the challenges there was that, you could provide them new outboard motors, new craft, new nets. But the challenge really was on the health side. And, the health expenditure of a traditional fisherman family was very high because the sanitation conditions were very poor. Right. And because the sanitation conditions were very poor, the infection rate was high, and that was leading to very high level of stunting and wasting. Right. And, a very weak mother, because of these infections, was leading to this. Absolutely. So now, I'd recently gone back to some of these villages, and I saw this huge transformation simply because there were good toilets, there was adequate supply of water, livelihoods had been transformed. Absolutely. Sanitation and health is linked. Let me also welcome Naina Lal Kidwai into the conversation. Naina, many thanks for joining us on this very special day. And I know you are someone who's been championing the cause of sanitation, of water, of hygiene for about 6 years now, when you started the Sanitation Coalition, Naina. I want to understand from you the journey that's been covered, the distance that's been covered, and more importantly, the 5 things, since we're asking everyone to share with us the 5 things that we need to focus on and prioritize, what would those be? So, Shireen, let me first start by thanking CNBC for making this such an important issue, for Rekit Benkaiser, Ravi, who is on our steering committee of the India Sanitation Coalition, and all that he brings, Amitabh, for the role he's played in ensuring that the competition that is created between cities is one that is absolutely paramount. So when you ask me about the 5 things, I think you have covered some, the criticality of the provision of toilets, absolutely, and what the government has done within that. The role of communities in ensuring that the whole understanding and linkage between health and sanitation happens. Very thrilled to see the municipal corporations of Indore and Punjab profiled by you. We need our municipal commissioners and the leadership they provide at the city level. I would like to add one conversation which those of us who work in the field are still working at, and we have a long ways to go, and that is the treatment side of it. It is not good enough to just now funnel all the shit into these toilets. If we do not treat it and it goes right back into the fields we had funneled it away from, then it's going to be a national disaster. Yeah. So the cleaning, the sewage treatment, the ensuring that we have recovery of wastewater from that treatment is key. And in order to do this, the infrastructure needs to be provided. It needs to be provided at a very distributed level. Gone are the days where we need just large municipal corporation built plants. We can have smaller plants. They can go into RWAs, into buildings, which is indeed what is mandated. We as citizens have to demand that these are always in working order and that the treatment facilities are indeed working. And believe me, the recovery, whether it be fertilizer in terms of the solid waste that is left, or indeed the wastewater recovery, is going to make it worthwhile. And if we as citizens have to pay for this treatment, then so be it. We must be willing to, because it keeps our environment and our water bodies clean. But the role of the citizen in knowing, demanding, and ensuring that we get the right level of hygiene and cleanliness, whether we're in a city or a village, is very, very critical. What is, Naina ji, namaste. This is Anand Narasimhan here, and this is not just on CNBC, it's on Awaaz, on News18 India, and on CNN News 18. So the entire might of the network is championing this campaign, because that's how important it is. But tell us a little more about the Lighthouse Village project. What is it all about in Uttar Pradesh? I am so happy that you asked. The Lighthouse project is a partnership which the Department of Drinking Water and Sanitation, the ministry at the center, has created. And 75 districts and Gram Panchayats across the country have been selected, of which UP has a number. And these are in Barabanki, in Lucknow, in Haldoi, in Saharanpur. So across these, where corporates have been picked and selected to work in partnership with the grassroots functionaries. And what the government is saying is, look, we have dedicated and committed enough money
We need to make sure that this is well spent. And in fact, at the core of this is the collaboration that the private sector, the not-for-profit and government, and of course the community can provide to make this model work. And the most successful models, whether in sanitation or water or any activity that is engaged in, are those where these collaborations come together. So what the Lighthouse Project has conceived of is, in UP, we have the HCL Foundation, Tata Trust and ITC as three major corporates who've come in, working with the Aga Khan Foundation, who is a grassroots provider of these services, and of course the panchayats themselves and the mission directors working as a collaboration to ensure that government committed money is spent, that it's spent in a way that is holistic in terms of provision of toilets. But if you look at our India Sanitation Coalition, which is making all of this come together, it is the build, yes, but the use, which comes with community activity, ensuring people use the toilets, maintain the toilets, and the treatment, the bump tea, is so important in this. And in ensuring that water is also provided, and that technology, repair, and innovation solutions are also provided at each level. And this partnership is well underway right now in Uttar Pradesh and of course in other parts of the country to ensure that we can create these model villages for others to follow. Fantastic. Absolutely. And you know, it's wonderful to hear the birds chirping as Nainalal Kitwar is speaking. It's absolutely wonderful to have that. But Mr. Kant, I just want to pick up on what we heard there from Naina. And I remember the day that the Swachh Bharat mission was launched, you and Param Iyer joined me that night to speak about the execution roadmap. And the aspect of collaboration, not just government at the center, but local governments, state governments, local administrations, the private sector, the social sector, getting everyone involved to make this a shared responsibility. How apprehensive were you at the start of the mission that without this collaboration, it wouldn't happen? And has this exceeded your expectation, the kind of partnerships that have evolved? So let me first compliment Naina for being so passionate about an issue which is of such a major concern for the country. Secondly, you know, I really think that when we started this, we'd not anticipated that there will be such a huge community response. It's been possible largely because of a huge political drive from the top. But I think it's also been possible because we've been able to get the community involved. Thirdly, I think important thing is that we did a huge amount of competition. So one of the things we learned earlier on is that it's very important to get data. Data is important for governance. Put that data in public domain. Start ranking districts, start ranking municipalities, start ranking states. This is exactly what we've done in aspirational districts. We picked up the most backward districts of India. The Prime Minister didn't call them the backward, he called them the aspirational district. We ranked them, we named and shamed poor performance, we appreciated good performance, and once you put out real-time data in public domain, it makes a huge difference. One last point I want to make, which Naina talked about, and that is about creating a business model. It's very, very important that if you want to sustain this over a long period of time, all of us Indians must learn to pay for water and must learn to pay for sanitation as well as we go along. Because each one of us must realize this, that sustaining such a large movement is possible if all of us really are able to help towards creating a great business model. You know, reuse of water, recycling of water, all this requires innovation, all this requires technology of a very good scale, and then we need to take it all across India, and at least the urban people, each one of us who come from middle or upper middle class family, each one of us must learn to pay for it. Pay for it, yes, but also use it responsibly and also take the message forward. So we are hoping to reach at least 200 million people, and we're hoping that at least today through this telethon, and each of those 200 million people, if we can take it to another 5 people, imagine we should be able to take this message to nearly 1 billion people, ladies and gentlemen. That's what we need to do and get talking about it, not just talking,
start acting on it too. आज हमारे बीच एक और ऐसी हीरो हैं डॉक्टर ज्योति लांबा, जो अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाती हैं और जिन्होंने गुजरात में 10,000 टॉयलेट्स बनाकर गांव वालों की मदद की है। एक टीचर से आप कैसे सैनिटेशन वॉरियर बनी, इसके पीछे का राज जो है वो आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। विश्व में बहुत अच्छी हूँ। आइए, आप इधर आ जाइए। ज्योति जी, एक आप हैं जिन्होंने 10,000 टॉयलेट्स बनाए, एक हमारे तमिलनाडु के कंडक्टर हैं जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। आपके पास आप में ऐसी सोच कहाँ से आ जाती है, कैसे किया आपने, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो आज विश्व शौचालय दिवस की पूरे भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरी बात, शौचालय पहले बनते थे, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने, महान विभूति जो हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये जहर कर दिया कि भाई आप शौचालय बनाओ, मैं मदद करूंगा, इससे इतना काम आसान हो गया ना, जैसे कि पतंग हवा में उड़ती है और डोरी पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऐसा ये काम हो गया। अब मैंने तो ये शौचालय बनाने का विचार मेरे मन में हमारे गुजरात विद्यापीठ सादरा में कुलपति जी की, नारायण भाई देसाई जी की गांधी कथा थी। उस समय हमारे गांव में काफी विद्यापीठ के और दूसरे गांव के लोग सब आए थे और आजू बाजू सब रहे, तो उस समय जो आए हुए मेहमान थे उनको शौचालय के लिए बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो हमारे वाइस चांसलर उस समय सुदर्शन भाई अयंगर थे, उन्होंने ऐसी बात की कि ज्योति बहन क्यों ना अपने ये शौचालय का काम वगैरह किया जाए। फिर मैंने हमारे साइंस सेंटर के प्रदीप भाई आचार्य थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और जब मैं गांव में गई तो फिर गांव में मैंने गांधी जी के विचार रखे। और गांधी जी के क्या विचार थे कि अंतिम व्यक्ति अर्थात जीवन में जो भी व्यक्ति है उसको जरूरत की चीजें तो प्राप्त होनी ही चाहिए। और फिर गांधी जी की जगह जब मैंने गांव के लोगों को देखा, बहनों को देखा, उसके बाद मैंने अपना हृदय उन बहनों में रखा। क्या बात। तब मेरे को शीशा और दर्पण सामने दिखाई दिया कि एक बहन की परिस्थिति क्या होती है, जो उसको प्राथमिक सुविधा प्राप्त नहीं है तो वो अपना जीवन कैसे जीती है। तो इस प्रकार जब ये जीवन जीना, और वास्तव में चंद्र अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, उसे कहना नहीं पड़ता, लेकिन इनको समझाने के लिए हमें सीमेंट और रेत से तो हम मकान बना सकते हैं, स्टील से, लेकिन घर के लोगों को समझाने के लिए एक परिवार, एकता, समूह, सबको समझाने के लिए बहुत मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और उससे मैंने जो शौचालय का काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को लगा कि वास्तव में जीवन यही है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, उसके बाद जब मैंने कहा, एक मिनट, जब मैंने कहा लोगों ने कि प्रमोशन ले लो, आप प्रमोशन के लिए फॉर्म भरो करो, तब मैंने क्या सोचा कि गांव के लोगों को, बहनों को मदद करना। और एक बहन अंधेरे की राह देख करके बैठी है कि कब अंधेरा होगा और कब मैं शौचालय जाऊंगी, वो देख करके मेरे मन में जो विचार आए, उन विचारों को देख करके मैंने ये काम आगे किया। आप एक काम कीजिए, मैं आपके गले लगना। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप अहमदाबाद से आई हैं, आप अहमदाबाद से आई हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अहमदाबाद। केतन जोशी is joining us from the Safai Vidyalaya in Ahmedabad. This is the original branch of the Harijan Sevak Sangh that was established by Gandhiji in 1932 to bring greater sanitation through instilling a sensitivity and removal of untouchability, as well as fostering the engineering and designing of toilets and sanitation technologies. Ketan bhai, kahan hai aap? ये वही है जो आपने जान किया, ये वाली जगह नहीं। देखिए, अभी हम सफाई विद्यालय में हैं, तो स्वाभाविक है कि सफाई की शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि हम कहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ टॉयलेट काफे पर मौजूद है और जो लोग आप देख रहे हो वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं। मकसद यही है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के विजिटर को समझाने का कि आखिरकार सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सफाई के वॉरियर्स है, गाँव में जाते हैं, लोगों की मुश्किल को समझते हैं, कई बार
लोगों के ताने भी इनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सफाई और पानी का अभियान है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ जो लोग छात्राएं बैठी है वो भविष्य की टीचर है, अभी से वो गांव में जाती है, गांव की परिस्थिति क्या है वो हम उनसे रूबरू आपको करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं अनारबेन पटेल से, जो कि इस सफाई विद्यालय में एक्टिव है, ग्राम श्री की ट्रस्टी है और कई सालों से गांव में जाकर ये काम करती है। कई सारे ताने भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना ये मिशन है वो छोड़ा नहीं है। तो हम अनारबेन से बात करते हैं। अनारबेन, ये मिशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर जब आप जाती है तब? गांधी जी की तपोभूमि से, सफाई विद्यालय से आप सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। ये जो सफाई विद्यालय है वो 1963 में ईश्वर भाई पटेल ने चालू किया था। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये ऐसा विद्यालय है जो गांधी जी के मूल्यों आधारित है। गांधी जी बोलते थे कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। उन्होंने बोला था कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो अति क्षुद्र के घर में हो, जिससे मैं उनका दुख और दर्द समझ सकूं। तो दो तरीके की बात गांधी जी ने बोली। एक था हार्डवेयर, कि घर घर शौचालय बने, और दूसरा था कि हमारी आदतें, कि जिससे हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गंदगी करते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो सफाई करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं हम उनको अछूत मानते हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि जो अस्पृश्यता इसके साथ जुड़ी है वो भी निकले। तो सफाई विद्यालय ने जो काम किया है, करीबन 4 लाख लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के टॉयलेट होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस होना चाहिए, एक साइड उसका भी काम किया। ईश्वर भाई पटेल खुद आर्ट पढ़े थे, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे, बट पूरा साइंस उन्होंने इसके पीछे लगाया। उन्होंने इतना तक रिसर्च किया कि एक ह्यूमन कितना वेस्ट उसके बॉडी से निकलता है, उसको उन्होंने वे किया और उसको देख के फिर उन्होंने टॉयलेट के डिजाइन किए। आज इतना डेप्थ में जाना, और अपने देश में ये 60 साल पहले की बात हो रही है, करीबन यहाँ से ये सफाई विद्यालय से 5 लाख टॉयलेट बने हैं, और गांधी जी को मूल्यों को लेकर ये सफाई विद्यालय आगे बढ़ा है। मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि गांव गांव जाना, लोगों को समझाना। उस टाइम पे जब टॉयलेट बनते थे, सरकार की सब्सिडी जाती थी, फिर भी लोग उसमें स्टोर रूम बना देते थे, उसमें से उनको निकालना और छोटी छोटी आदतों तक उनको पहुंचाना। क्योंकि आज हम कितना भी बड़ा काम कर ले, हम 100% टॉयलेट बना भी दें, बट अपने देश की गंदगी निकल नहीं रही है। और उसका कारण क्या है? हमारी छोटी आदतें। जो आदतें अगर हम खुद निकालेंगे, हम खुद वो मिशन में जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, तो हम खुद को अपने आप में बदलना होगा। और ये चीज सफाई विद्यालय ने पकड़ी, गांव तक, स्कूल तक ये लेके गए। स्कूल सैनिटेशन पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ से। और इसका रीजन ये रहा था कि ड्रॉप आउट जो होते थे बच्चियां, वो ज्यादातर ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ सैनिटेशन के कारण होती थी। तो आज अपने देश में जो सैनिटेशन की स्थिति है, जो अभी धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों तक, ये आदतों तक इस चीज को पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि ये टॉयलेट का विषय है और हर क्षेत्र में अलग प्रकार के टॉयलेट बनते हैं। जहाँ पे पानी का स्तर ऊपर है वो अलग टॉयलेट होगा, जहाँ पे पहाड़ी है उसका टॉयलेट अलग होगा। तो हर जगह टॉयलेट अलग है, सिटी में अलग टॉयलेट है, गांव में अलग टॉयलेट है। तो ये जो टॉयलेट कैफे बना है वो पहले टॉयलेट का प्रदर्शन है। पहली बार टॉयलेट का गार्डन अगर पूरे देश में किसी ने बनाया है तो ईश्वर भाई पटेल ने बनाया। ये विचार टॉयलेट गार्डन एंड कैफे। केतन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस देयर फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दिखाया भारत का पहला टॉयलेट कैफे। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया टू मेनस्ट्रीम द कन्वर्सेशन। The lady who was speaking, yes, her mother is the former Chief Minister of Gujarat and currently the Governor of Uttar Pradesh, Anandiben Patelji's daughter. But she has taken it upon her to go ahead and take this cause forward on ground. So that's how everybody needs to do it. That's what everybody needs. Well, speaking of action, Mr. Kant, I want to understand from you, what can we expect now over this year as we get ready for the G20? How important is the health aspect and the sanitation aspect linked to health going to be as part of the presidency agenda? So Shireen, my belief is that globally you can't have growth, you can't have progress, you can't lift people above poverty line unless and until you don't focus on sanitation and water. And this is, to my mind, very critical because very vast, 200 post-COVID.
it's important to understand that 200 million people have gone below poverty line. 75 million people have lost jobs. Yeah. And therefore, our focus has to be brought back to these basic issues. If we are able to do this, and this would require several things. First and foremost, this would require us to change habits, as was very rightly said, amongst children. We have to inculcate this amongst children. If we are able to do this, it's very important. Secondly, we've brought in a mass movement of toilets and of water. We need to take this to the next stage of what Nana said, the fecal sludge management, which is very important, and of ending plastics. So we need to keep evolving the movement. Thirdly, like Jyoti Behan, we need every Indian to become like her, become really a brand ambassador, and become that I am going to convert 100 more people into this. This is very important. Fourthly, this can't be a government movement. You know, the government, the Prime Minister has driven it, but it can't be a government movement. It has to be a community movement, and everyone needs to join, and this would require a lot of movement from civil society organizations and from the private sector of India. And therefore, if the private sector has to do it, not only do you need to make new toilets, but you also need to actually bring in a huge behavioral change. At the end of it all, it's all about behavioral change and people of India really asking that this is benefiting them in terms of better health and better nutrition. And that's exactly what we started the conversation with. When Parineeti walked onto stage, she said that she's a citizen in progress. And that's exactly what you're alluding to as well, that all of us as citizens need to evolve, need to change, need to bring in a change of habits and behavior as well. Mr. Kant, I want you to do something very special for us. Before that, we just quickly go back to Ahmedabad. Neralalji is with us, but I want to go back to Ahmedabad because Ketan is there with some students who are also doing this. So आप कुछ छात्रों से बात करने वाले थे केतन जी. बिल्कुल बिल्कुल कुछ स्टूडेंट से बात करवाएंगे जो कि गांव-गांव में जाकर स्वच्छता और पानी को लेकर उनको क्या अनुभव है, आइए उनसे ही रूबरू होते हैं. अच्छा बताइए, आप जब गांव में जाती है, स्वच्छता और पानी के बारे में लोगों से पूछती है, किस तरह का आपको जवाब मिलता है, क्या अनुभव है आपका? मैं अब डीएलएड के कोर्स में पढ़ाई कर रही हूँ. तो जब मैं एक शिक्षक तरीके से स्कूल में गई थी तो बच्चों ने मुझे एक सवाल किया कि क्या हम भविष्य में एक शुद्ध पानी और शुद्ध हवा पा सकेंगे. तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि हमारा भारत वहाँ स्वच्छ हवा और पानी अभी तो है, लेकिन हमारे जो प्रदूषण हो रहे हैं उसकी वजह से भविष्य में क्या पता उन बच्चों को ना भी मिल सके. तो जो जल से लेकर लय तक हमसे जुड़ा है, उस पानी को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए. बूंद बूंद से समुद्र बनता है, इसीलिए जल को बचाना है हमें, तो हमें शुरुआत बूंद से करनी पड़ेगी. अभी जो हमारे देश में नल से जल तक का कार्यक्रम जो चल रहा है उसे हम आगे बढ़ाएंगे. उसके लिए मैं खुद जल को बचाने के लिए मैं खुद से शुरुआत करूंगी. तो आप सब मेरे साथ है करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए, पीढ़ी है, उनका भी यही सवाल है. बिल्कुल, अगर आपको कुछ बोलना है एक साथ तो नारा लगाइए. जी. नारा का हमारा एक बहुत अच्छा नारा है कि सफाई आंदोलन जिंदाबाद. उसके साथ में हम जोड़ना चाहेंगे कि हम सब एक है और पानी बचाए वो नेक है. क्या बात है. बहुत सारा थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी और आप सबको वहां पर जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं. बट वन थिंग शिरीन आई सी एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू चेंज. देयर आर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु गर्ल्स. It's time the boys start doing this, and they have to take it up. And I'm seriously saying it. I couldn't agree more with you. But Mr. Kant, we want you to do something very special for us. We've got a preamble that we put together to really take this message not just to parts of India but outside of India as well. And we would like you to honor Jyoti ji, who's here with us, and also Parineeti for championing this cause with us this day to day. Can we have the preamble? And Mr. Kant, can you please do the honors? The mission Swachhta और पानी preamble. सर, एक हमारे संविधान में preamble है और एक इस कैंपेन का preamble है. ज्योति जी आपके लिए है.
अरे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे इसमें थैंक यू, आभार। Lovely. मैं गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक कुल सचिव राजेंद्र भाई, हमारे जो पहले कुल सचिव थे खिमाणी, अभी वो कुल नायक हैं, और विद्यापीठ का परिवार जिन्होंने मुझे इस काम में बहुत सहयोग दिया और कभी कभी कार्यक्रम देखने भी आते थे और मेरा ध्यान भी रखते थे, और हमारे यहाँ गांव में जो भी कुछ तकलीफ है वो गांव के कार्य को पूर्ण करते हैं। लेकिन मैं आपसे 5 मिनट देकर कुछ कहना चाहती हूँ कि गांव में जब हम काम करते हैं तो गांव में कैसे शुरुआत की जाती है। मैं भी एक प्रोफेसर थी तो कई लोग मुझे घृणा की दृष्टि से भी देखते थे कि मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी, बीए में यूनिवर्सिटी फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, पर मैंने कभी शर्म नहीं की। मैंने ये काम करने के लिए यही सोचा कि एक बहन, एक माता, एक वृद्ध, एक बुजुर्ग यदि शौचालय बन जाता है तो उनको कितनी सुविधा होती है। एक महुंदरा में एक बहन 8 महीने का गर्भ था उसके पेट में, रात की राह देख रही थी, और गांव में तो पति साथ में नहीं जाते, शौचालय नहीं होती, तो बाहर शौच के लिए गई, लेकिन सद्भाग्य से उसकी डिलीवरी मिस हो गई। बहुत दुख हुआ। तब लगता था कि आज शौचालय होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। फिर मैंने निश्चय किया कि भले कुछ भी हो, चाहे रविवार हो चाहे जाहिर रजा हो, तो मैं किसी अपने घर के फंक्शन में ना जाऊं, लेकिन जब मुझे समय मिले तो गांव का कार्य जरूर कराऊं। और एक बहन, एक बेटी जो डिलीवरी करके आई है, उसके घर यदि शौचालय नहीं है, उसके घर स्नानागार नहीं है, पर्दा लगा करके वो लोग नहाने के लिए बैठे हैं, राह देख के बैठे हैं। और तब ऐसा हुआ कि यदि इनका जीवन और हमारा जीवन तो एक है, मनुष्य तो एक है, मनुष्यत्व सब में है और परमात्मा सब में है, हमारी दृष्टि, और सोचा कि बहुत चीजें तो महंगी हैं, हीरा भी महंगा है, सोना भी बहुत महंगा है, लेकिन उत्तम विचार सबसे सस्ता है। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बहुत आपके लिए मुझे मेरे विद्यापीठ के कुलनायक कुल सचिव अनामिक भाई शाह तो मुझे टॉयलेट लेडी कहते थे, और सुदर्शन भाई मुझे कहते हैं शौचालय वाली बाई, और भी मुझे कोई शर्म नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन कई लोग आज भी मुझे ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने, इनका फोन आया बहन का कि बोले आपको आना है, तो मैंने कहा हाँ, ये तो मेरा प्रतीक है। मैं बस ये कहूंगा कि आप इतनी क्यूट हैं ज्योति जी, कि आप जैसा जज्बा सबके दिल में हो ना, तो बस, तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ। ये जो प्रियम्बल है ना, इसमें एक वादा है, एक संकल्प है, तो जो आपने किया है, आप जैसे हम सबको करना है, करेंगे ना सब? हम सब साथ मिलकर करेंगे। बहुत बढ़िया। आइए, अब आप इधर आइए, अमिताभ जी को यहाँ आने दीजिए ताकि वो यही प्रियम्बल परिणीति जी को भी दे दें। Thank you so much. Thank you, sir, and to you. A round of applause, ladies and gentlemen. So much. Thank you. For the wonderful Lovely. Parineeti Chopra, and our gratitude and our deepest appreciation for Mr. Kant for being here with us. I know that you had to make a lot of changes in your schedule, so we really, really thank you for being here with us. Thank you so much. We are going to take a break, ladies and gentlemen. Don't go anywhere. The grand telethon, Mission Swachhta and Paani, continues right after this break on Network 18. Don't go anywhere. We're back in a moment. Network 18 का भी बहुत